नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया. A very good morning to you all. Myself, JV'n Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Medicine at JAYOTI VIDYAPEETH, University, Jaipur. Today, we will continue with the neurological disorders. In today's lecture, we will be discussing about primary headache. In the last lecture, we have learned the classification of headache, and the headache was classified into two parts. It was primary headache and secondary headache. So secondary headache was due to some other disorder that was leading to headache, like various problems of the vascular system, due to injury, the brain tumor, any other infections and all. So these were related to the secondary cause. So we won't be discussing them here, but the primary cause that is related to the head itself. So we will be discussing few important primary headache disorders in this particular lecture. So three important headache will be discussed here. That will be tension headache, the most common type of headache, the cluster headache, and the migraine. Migraine is the second most common cause of headache. So what is primary headache? This is just a revision of the previous lecture. Primary headache is those in which the headache and its associated features are the disorders in itself. These are the disorders in itself. They are not due to the result of some other disorder. They are not the result of another medical condition. And the classification includes tension type of headache, most common type of headache. Cluster headache, this is the least common, that occurs only in 0.1% of cases. Migraine, second most common cause of headache, idiopathic when the cause is not known. So we cannot learn much about it when the cause is not known to us. Exertional headache that occurs in 1% of the cases, and the only resolution to this headache is taking proper rest. So this is also very severe only. Now we come to the tension headache. Tension type of headache, the most important and most common type of headache, with which maximum population, around 65 or 69% around population is suffering of headache, is suffering from the tension type of headache. It's the most common type of headache. Almost आप सभी को कभी न कभी tension headache हुआ होगा. It's the most common type. So it is common in all the age groups. आजकल के छोटे-छोटे बच्चों में these days we find tension headache very common in children, especially a 5 years, 6 years, 7 years old, very small children. What is the character of this headache is that it builds slowly, it increases gradually, and may persist for hours and days. The pain can persist for hours and days. This is all kind of pain. This is not very severe pain. The pain is of a dull variety. It is described as bilateral tight band-like discomfort. The patient describes this pain as a band-like discomfort, as if something is tied around the head. जैसे कि कुछ बांधा हुआ है सर पे, जैसे बैंड बंधा हुआ है सर के ऊपर, इस तरह का पेशेंट को महसूस होता है. The pain is managed. How it is managed? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है. और टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है? सिंपल एनाल्जेसिक्स के लिए few simple analgesics like acetaminophen or aspirin managed areas. The pain is managed easily. Now the second one is the cluster headache. It is very rare headache, occurs only in 1% of the cases of headache. But this disease severity, the headache severity is the most in cluster headache. This is very severe kind of headache. The cluster headache, it is very severe type of headache. Let's see the picture of headache. What is the location? It occurs over one eye. Cluster headache is a severe debilitating headache on one side of the head. This covers eye दिख रही है ना आपको red. You can see the red eye. This is the location of cluster headache. There can be sweating, there can be swelling, there can be tearing and running of the nose. So these are a series of relatively short but extremely painful headaches. These are extremely painful headaches every day for weeks, for months. The pain is coming every day for weeks, for months. The patient is suffering from pain. Every day the pain is coming, the severe intensity pain is coming to the patient. It is coming to the patient since months and years, daily basis. At the time, it is usually occurs in cyclical pattern. The cyclical pattern is very important in cluster headache. That is, therefore, the name has been given cluster headaches. Cyclical pattern. It is characterized by episode of recurrent. Recurrent means occurring again and again. D. There is great deep depth of the pain. Unilateral retroorbital searing pain. There is great retroorbital searing pain is there. The unilateral lacrimation. It is associated with unilateral lacrimation. एक side की आँख आपने देखी थी ना image में. So one side of eye is involved and there is unilateral lacrimation from the eye, and there is discharge, water discharge from the nose, and conjunctival congestion may be also.
सो आँख से भी पानी आ रहा है, नाक से भी पानी आ रहा है, भयंकर पेन है, आपकी जो आईज एकदम कंजेस्टेड होती है, रेड होती है, and there is severe pain. तो पेशेंट को आप बिल्कुल देखते पहचान सकते हो इसके अंदर केस ऑफ cluster headache. Hypophylaxis is the vomital and pregnancy walk, and the usually high flow of oxygen is advised in such a patient. जब भी पेशेंट का सर दर्द होता है तो उसे बोला जाता है खुली हवा में चले जाओ, या फिर अगर वो एडमिट है हॉस्पिटल में तो आपसे हाई फ्लो का ऑक्सीजन पेशेंट को दो जिससे कि उसका एक्यूट अटैक चला जाए. This is the cluster headache, one-sided eyes getting affected. Now migraine. This is the most important type of headache. Second most common but most important. इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, you get a question on migraine. This is the most important type of headache in today's lecture. What is a neurological condition? What is migraine? Migraine बहुत लोगों से आपने सुना है कि migraine हो रहा है, migraine हो रहा है, मुझे migraine हो गया है. बहुत सालों से migraine है, मैं बहुत परेशान हूँ migraine की वजह से. But what is migraine? You should understand this. What is migraine? Migraine is basically a neurological condition that involves multiple symptoms. It is characterized by intense debilitating headaches. In this, there is great debilitating headaches. The symptoms include nausea, vomiting, and difficulty in speaking. सिर दर्द के साथ में पेशेंट को unilateral one-sided headache होता है, with which there is association of nausea and vomiting. There is great difficulty in speaking. Patient बोल नहीं पाता दर्द की वजह से. There is numbness and tingling. There is great numbness and tingling and sensitivity to light and sound. पेशेंट को जब भी माइग्रेन होता है तो वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंधेरे कमरे में एकदम चुपचाप पड़ा रहता है because there is great sensitivity to noise and light. The nausea, vomiting, difficulty in speaking. There is a classical triad. In the cases of migraine, there is a classical triad. Triad किस चीज़ का होता है? Premonitory, visual scotoma और stimulation होता है, लाइट चमकती सी दिखती है उसको. There can be sensory और motor symptoms. Aura होता है. Aura वो symptoms होते हैं जो कि डिजीज आने से पहले फील होता है पेशेंट को, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे हम लोग सीजर्स में पढ़ेंगे ऑरा. उसी तरह से माइग्रेन में होता है. ऑरा मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जिससे पहले जिसके आने से पेशेंट को पता चलता है कि मुझे माइग्रेन का अटैक होने वाला है. जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आंखों के आगे एकदम बिजली चमकती हुई सी, कौंधती हुई सी, ठीक है. कुछ सेंसरी या मोटर सिम्टम्स पेशेंट में आने लग जाते हैं जिससे कि उसको पता चल जाता है, ही कैन अंडरस्टैंड दैट यस the attack of migraine is going to come. There can be unilateral throbbing headache and nausea and vomiting. So this is a triad, classical triad of migraine. That is number one, aura. Number two, unilateral throbbing headache. एक साइड का आधे सीसी का दर्द, जिसे आधे सीसी का दर्द. And there can be nausea and vomiting that is associated. So three things: aura, half-side headache, one-sided headache, and nausea and vomiting. It is the second most common disorders cause of headache. This I have already discussed with you that migraine is the second most common cause of headache, and the most common neurological condition of disability in the brain. This is the most common cause of disability. इसके वजह से लोग इतने ज़्यादा डिसेबल हो जाते हैं कि अपना काम ठीक से नहीं करता. जब भी माइग्रेन का अटैक होता है तो सब कुछ छोड़ के बैठना ही पड़ता है और कुछ नहीं होता है. It affects approximately 15% of the women and 6% of the men only. So women का incidence ज़्यादा है और men's का कम. So it affects approximately 15% of women and 6% men. Onset is usually in the childhood. So the onset of pain that occurs is usually in the childhood, adolescence, and early adulthood. तो बचपन में ही इसका पेन शुरू हो जाता है, चाइल्डहुड में ही पेन शुरू हो जाता है, एडोलेसेंस में भी रहता है, अर्ली एडल्टहुड में रहता है. However, initial attacks may occur at any age. Initial attacks that are coming to the patient that can occur at any age. The family history is often present. जब भी किसी इंडिविजुअल को पेन होता है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन आपको जरूर है. The woman may have an increased sensitivity to attack during the menstrual cycle. This is also a very important symptom. But whenever a female is coming to you, always ask about the intensity of pain during menses, because every time the patient passes through the menstrual cycle, there is great intensity of pain. It is often to be recognized by the activators. माइग्रेन को आप इसके एक्टिवेटर्स से पहचान सकते हैं. एक्टिवेटर्स मतलब these are the triggering factors जिनकी प्रेजेंस में माइग्रेन आता है. Migraine occurs in the presence of certain factors that are known as the triggering or the triggers. The patient is insensitive to environmental and sensory stimuli. जो patient होता है आपका वो environmental और sensory stimuli के लिए बहुत ज़्यादा sensitive होता है, to which they do not habituate easily. इससे कि वो habituate easily नहीं हो पाते, मतलब उनके साथ में आराम से नहीं रह पाते.
कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में पेशेंट, जिनकी कॉन्टैक्ट में पेशेंट आते हैं उसको माइग्रेन शुरू हो जाता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं, सेंसरी स्टिमुलाई हो सकते हैं, and in the presence of those stimuli the patient gets attack of migraine. उन चीज़ों से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइग्रेन वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो उससे सेंसिटाइज पूरी तरह से हैबिचुएट भी नहीं हो पाता, उससे प्रॉब्लम रहती है। इट इज एम्प्लीफाइड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ड्यूरिंग मेंसेस ये जो कंप्लेन होती है ये बढ़ जाती है। अब ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हाउ डू यू कंप्लेन? ट्रिगरिंग फैक्टर्स कैन बी मेनी फैक्टर्स, कुछ की हम यहाँ बात करेंगे। द ट्रिगरिंग फैक्टर्स कैन इंक्लूड ग्लेयर, एकदम ब्राइट लाइट अगर आपकी आती है, ग्लेयर होता है। साउंड्स, एकदम साउंड आई किसी को, तीखी साउंड, श्रिल साउंड अगर किसी ने सुनी तो उससे उसका माइग्रेन बढ़ जाता है। हंगर, भूख लग रही है, खाना नहीं खाया तो उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। बहुत लंबे समय से भूखे बैठे हैं उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है, वो ट्रिगर फैक्टर काम कर सकता है। ऐसे पेशेंट को बोलते हैं आप खाना खाते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, भूखे मत रहो ज़्यादा समय तक। Stress can be a triggering factor. Physical exertion can be a triggering factor. There can be hormonal fluctuations. There can be lack of sleep. सोए नहीं उसकी वजह से माइग्रेन होगा, माइग्रेन करता है lack of sleep की वजह से। काफी फैसिलिटीज हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। अल्कोहल लेने की वजह से, आफ्टर इंटेक ऑफ अल्कोहल द माइग्रेन कैन अकर एंड अदर हार्मफुल स्टिमुलेशन। What is the pathogenesis? Pathogenesis क्या है? So pathogenesis behind occurring of the migraine attacks. The exact pathophysiology is unknown. बहुत अच्छी बात है। Exact pathophysiology पता ही नहीं था, आप लोगों को याद नहीं करना, याद नहीं करना तो बहुत आसान होता है। But still, there are some theories that we have to learn. The sensory sensitivity is due to the dysfunction of the monoaminergic sensory control system. जो monoaminergic sensory control system होता है, उसका dysfunction हो जाता है sensory activity का। Located in the brainstem and hypothalamus. That is located in the brainstem and hypothalamus. The blood level of histamine, serotonin, and norepinephrine is increased. During the attack of migraine, the blood level of histamine, serotonin, and norepinephrine is increased. There is activation of the cells in the trigeminal nucleus. So activation of the cells in the trigeminal nucleus results in the release of vasoactive neuropeptides, particularly calcitonin gene-related peptide, जिसको हम शॉर्ट में CGRP बोलते हैं। ठीक है, वो क्या रहा है यहाँ पे, एक्टिवेशन ऑफ सेल्स इन द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। तो कुछ सेल्स होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस की जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट रिजल्ट इन द रिलीज, उसके वजह से रिलीज होता है किस चीज का, वेसोएक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स का। कौन सा वेसोएक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होता है, सीजीआरपी। सीजीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एट द वेस्कुलर टर्मिनेशंस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके वेस्कुलर टर्मिनेशन पे सीजीआरपी का सिक्रेशन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि पेन की फीलिंग आती है पेशेंट को। अब अगर आपको पेन होने से बचाना है या पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी को कम करना है तो आपको सीजीआरपी एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे, जिससे उनका रिलीज नहीं हो पाए, वो काम नहीं कर पाए और पेशेंट को पेन नहीं हो। So the CGRP receptor antagonists have been shown to be effective in the acute treatment of migraine. So इसीलिए CGRP antagonists are used for the treatment of migraine. Dopaminergic stimulation can also induce the symptoms of migraine. Now, what is the diagnostic criteria of migraine? How will you diagnose the case of migraine? तो ट्रायल में बताया था कि उसके अलावा भी कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम माइग्रेन को डायग्नोस करते हैं कि yes, this is the case of migraine. So what is the diagnostic criteria? Number one, repeated attack of headache lasting for 4 to 72 hours. बार बार किसी भी पेशेंट को रिपीटेड अटैक्स हैं हेडेक के जो कि 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक 3 दिन तक रह रहे हैं अगर पेशेंट में, तो द नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल आ रहा है और किसी भी तरह की और डिजीज हम लोगों को पकड़ में नहीं आ रही। बार बार पेशेंट बोलता है मुझे सिर दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, अगर अटैक्स आते हैं 4 to 72 आवर्स तक रहती हैं, 4 घंटे से 3 दिन तक रह सकते हैं, with no other physical abnormality and no other reasonable cause for headache. इसके अलावा आपको और कोई कॉज नहीं मिल रहा है, there is no cause for headache, तो उस केस में हम लोग माइग्रेन के बारे में सोच सकते हैं। अब जो with at least 2 of the following features, इनमें से 2 फीचर्स मौजूद होनी चाहिए, there can be or the pain can be of throbbing in the right ear, aggravation by movement, the pain can be aggravated by movement or moderate or severe intensity। इनमें से कोई भी 2 चीजें मौजूद होनी चाहिए, यूरिनरी पेन हो या थ्रॉबिंग हेडेक हो या एग्रावेशन बाय मूवमेंट हो या मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी। चार में से अगर 2 चीज मौजूद हो प्लस इसके साथ एक चीज और मौजूद हो जिसमें नॉशिया और वॉमिटिंग या फिर फोटोफोबिया फॉर्म। तो कुल मिला के 3 फीचर्स, अगर इन 6 में से अगर कोई 3 फीचर्स मौजूद हो, 4 में से 2 पहले में से और 2 में से 1 बाद में से, तो वी कैन डायग्नोस दिस माइग्रेन।
Now, how will you classify migraine? The classification of migraine is very broad, but we will just be looking at the superficial classification. Why I have kept the superficial classification of migraine to you is that you should not form a theory that migraine has these kind of classical features that should be present in all the patients. तो मैं यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है माइग्रेन में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि सेट पिक्चर ही मिलेगी, हमें हाफ हेड आधे से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको नौशेवान मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देयर इज वाइड वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ सिम्पटम्स इन केसेस ऑफ माइग्रेन। सो क्लासिफिकेशन दिया गया है 1.1 माइग्रेन विदाउट ऑरा। तो ऑरा हो भी सकता है, ऑरा नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी विदाउट ऑरा, इट कैन बी विद ऑरा। 1.2.1 जिसके अंदर आता है टिपिकल ऑरा। टिपिकल ऑरा हो सकती है, ऑरा विद हेडेक हो सकता है, ऑरा विदाउट हेडेक हो सकता है। मतलब आप देखिए ऑरा है लेकिन हेडेक ही नहीं होगा, वो भी माइग्रेन में चला जाएगा। क्रॉनिक माइग्रेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा समय से माइग्रेन है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइग्रेन, ये भी माइग्रेन में जाएगा। प्रोबेबल माइग्रेन, कई बार हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं माइग्रेन के लेकिन हम उसे डायग्नोस नहीं कर पा रहे, हमें जो क्राइटेरिया चाहिए 3 क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो हम उसे डालेंगे प्रोबेबल केस ऑफ माइग्रेन के। एपिसोडिक सिंड्रोम दैट मे बी एसोसिएटेड विद माइग्रेन। ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन 1.1 से 1.6 तक दिया गया है। Now, what are the clinical features of migraine? Apart from those diagnostic features, हम और क्या-क्या symptoms इसमें clinical features migraine में देख सकते हैं? The migraine aura, aura मतलब जो symptoms पहले आ रहे हैं यहाँ पे, consisting of visual disturbances with flashing lights. तो aura मतलब जो symptoms पहले आ रहे हैं, migraine का attack आने से पहले, brain का attack आने से पहले, there is an aura. Aura में आपको क्या दिखता है? Flashing of lights दिखती है, zigzag lines दिखती है, moving across the visual field, और the other neurological symptoms. इसमें और neurological symptoms भी आपको देखने को मिल सकते हैं. It is reported in around 20 to 25% of the patients. क्रॉनिक माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन और आपको 20 से 25% केसेस में दिखता है जिसमें आपको फ्लैशिंग लाइट दिखती है, zigzag लाइंस दिखती है आंखों के आगे, मूविंग अक्रॉस द विजुअल फील्ड। ये 20 से 25% ऑफ द केसेस ऑफ माइग्रेन आपको देखने को मिलेगा। इट कैन बी क्रॉनिक माइग्रेन इन द एपिसोड्स ऑफ माइग्रेन अकर्स डेली फॉर नियरली 15 डेज और मोर इन अ मंथ। अगर क्रॉनिक माइग्रेन जो बार-बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, ऑलमोस्ट डेली हो रहा है, तो 15 दिन से ज़्यादा एक महीने में रह रहा है। एसिफेल्जिक माइग्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसिफेल्जिक माइग्रेन मतलब यहाँ पे हेडेक है ही नहीं, सिर दर्द नहीं है, बस ऑरा आता है। एसिफेल्जिक मतलब बिना सिर दर्द के। तो आप बोलोगे माइग्रेन बिना सिर दर्द के कैसे हो गया, बट क्लासिफिकेशन में था ही ऑरा विदाउट हेडेक। सो यहाँ पे ऑरा आता है, टिपिकल ऑरा विदाउट हेडेक। देयर आर रिकरेंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफन विद नॉशिया एंड वॉमिटिंग। नॉशिया वॉमिटिंग है लेकिन हेडेक नहीं है, ऑरा भी है ना, तो बट विद लिटिल और नो हेडेक। वर्टिगो इज प्रॉब्लम patient in this patient, vertigo is very common. 1/3 of the patient referred for vertigo or dizziness have a primary diagnosis of migraine. 1/3 ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास में वर्टाइगो के आते हैं, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, जितने भी चक्कर वाले पेशेंट हमारे पास में आते हैं उनमें 1/3 पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी माइग्रेन की कंडीशन हो बिना हेडेक वाला माइग्रेन, एसिफेल्जिक माइग्रेन उस पेशेंट को हो सकता है। सो ऑलवेज इन्वेस्टिगेट सच केसेस। अब ये देखिए किस तरह की ऑरास यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलती है। उसे लाइट चमकती दिख सकती है, ऐसे ऐसे zigzag लाइंस देखने को मिल सकती है, इस तरह से स्कोटोमा देखने को मिल सकता है, या फिर फ्लैंकिंग डार्क, आधी साइड डार्क, आधी साइड आपको ब्राइट देखने को मिल सकती है। these are the different auras of the patient. Now, what are the symptoms? Symptoms of migraine. क्या क्या symptoms हमारे पास में आता है पेशेंट के? बहुत सारे symptoms हैं। डायग्नोसिस करना अलग चीज़ थी, वो हमने डायग्नोस किया, लेकिन क्या क्या symptoms हमारे पास में पेशेंट लेके आ सकते हैं। The symptoms can be nausea. 87% of the cases. Percent के साथ साथ लिखा हुआ है. I'll be talking only about the symptoms. So nausea is most common. Then you can have photophobia. You can have lightheadedness. Scalp tenderness can be there. There can be vomiting, visual disturbances, paresthesia, vertigo. There can be photophobia, alteration of the consciousness, diarrhea, fortification spectra. There can be symptoms. Seizures can also be the symptoms with migraine. And confusional state. These are the symptoms of migraine. So again, we have mentioned nausea, photophobia, lightheadedness, scalp tenderness, vomiting, visual disturbances, paresthesia, vertigo, photopsia, alteration of the consciousness, diarrhea, fortification spectra, syndrome, seizures, and confusional state. Now, how will you assess that the patient of migraine is getting worse, the condition is getting worse, or the condition is getting improved after the administration of medicine? So there is a scale for measurement of disability due to migraine. So that is known as MIDAS scale, MIDAS, Migraine Disability Assessment Scale. So we have to inquire about the headache over the last 3 months. We have to inquire from the patient about the headache that he had experienced in the past 3 months.
and we have to ask 5 questions related to it. And then we have to calculate the MIDAS score that will tell us that whether the patient has improved or not after the treatment. So what are the different MIDAS questions here? On first question is how many times in the last on how many days in the last 3 months did you miss work or school because of your headache? पिछले 3 महीने में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको दर्द की वजह से आपने स्कूल या काम को मिस किया? Second is how many days in at least last 3 months that you have your productivity at work or school was reduced by half or more because of your headache. अगर आप जितने दिन गए भी हो उसमें भी ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी काम करने की क्षमता आने से कम रह गई है? एक्सक्लूडिंग Q1 मतलब जितने दिन नहीं गए उसके अलावा की बात कर रहे हैं आप. Then third question is on how many days in the last 3 months did you not do household work because of your headache? पिछले 3 महीने में ऐसे कितने दिन ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से जब हेडेक की वजह से आप अपने घर का काम नहीं कर पाए हैं? Fourth question, how many days in the last 3 months was your productivity of household work reduced to half or more than half because of your headache? तो जितने दिन काम नहीं कर पाए घर में उसके अलावा जो बाकी बचे हुए दिन थे उसमें भी कितने दिन ऐसे थे जब आप अपने काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए या आधे से कम कर पाए? Fifth question is on how many days in the last 3 months did you miss the family social leisure activity because of headache? पिछले 3 महीनों में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आप हेडेक की वजह से अपने कोई फंक्शन में नहीं जा सके, फैमिली फंक्शन में नहीं जा सके, ट्रिप पे नहीं जा सके? इसमें 2 पार्ट्स है ये और भी. on how many days in the last 3 months did you have a headache? A में कितनी बार हेडेक हुआ है और on the scale of 1 to 10 the average how painful is headache attacks were. इन सबको आप 5 क्वेश्चंस पेशेंट से पूछते हैं that is known as migraine disability assessment score MIDAS score. Or depending upon the result, then we can grade the migraine into 4 grades. In grade 1, there is minimal to frequent disability. The score ranges from 0 to 5. In grade 2, there is mild to frequent disability. The score ranges from 6 to 10. And in grade 3, there is moderate disability, 11 to 20. In grade 4, there is severe disability, greater than 20. Now, what is the management of migraine? How will you manage the case of migraine? There are 3 approaches basically for the treatment. One is non-pharmacological approach. Then we are finding out the triggering factors, and then we are trying to remove those triggering factors that are responsible for the development of migraine. Second one is pharmacological. Pharmacological, when we are giving medicines for the treatment of migraine. This includes simple analgesics and NSAIDs. And third one is prophylaxis. Prophylaxis means we are prophylactically giving medicines for the other condition, like tricyclic antidepressant you are giving Verampil, that are prophylactically given to prevent the recurrence of migraine in a particular patient. So these are the 3 approaches that are commonly followed in the cases of migraine. So in this lecture, we have discussed about attention headache, we have discussed about cluster headache, and we have discussed about the migraine. So this completes the primary headache. In the next topic, we will be discussing about trigeminal neuralgia. This session was powered by digital version 2.0 JAYOTI VIDYAPEETH University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention it in the comment box and try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. This was Dr. Ravi, and we will meet in the next topic tomorrow. Thank you very much.